Hello everyone and welcome to iQuanta. In our series of interviewing the CAT toppers, today we have with us Sauradeep Banerjee, who is an iQuanta student and scored 99.95 percentile in CAT 2023. First of all, very congratulations to you Sauradeep and welcome to iQuanta office. ओके। और ये अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद। आए हैं अहमदाबाद? अरे नहीं अहमदाबाद का इंटरव्यू देके आ रहा हूँ। अच्छा, इंटरव्यू में आपको किसने बुलाया? कैसे आए? वो तो सारे आई थिंक iQuanta वाले ही जा रहे थे। असल में iQuanta वाला ही हूँ। आप iQuanta से हो? कितना परसेंटाइल था आपका? 99.95। अरे 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 आप अंदर आइए, आप अंदर आइए, आइए आइए। तो गाइस वी हैव सौरादीप। तो ये बेसिकली सीधा सीधा आई एम अहमदाबाद के इंटरव्यू से आ रहे हैं। एंड क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? लेट्स सी। सबसे टफेस्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपका अहमदाबाद में जो आप नहीं बता पाए? यही नहीं बता पाए? अच्छा, गोवा से है क्या? तभी। तो बेसिकली ये 99.95 परसेंटाइल लाए हैं। आई थिंक थर्ड हाईएस्ट परसेंटाइल है फ्रॉम iQuanta। एंड इस बात पे इनको एक आईपैड गिफ्ट मिलता है। देख लीजिए, आईपैड ही है, कुछ और ईट नहीं मिलेगा। तो एक चीज, इन्होंने सिर्फ आई एम एबीसी बैच और आईकैट का मॉक ही दिया था। आई वाज सरप्राइज कि इन्होंने आईकैट के अलावा कोई और दूसरा मॉक नहीं दिया। एंड आई थिंक ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जुलाई, राइट? तो जून से इन्होंने स्टार्ट करके 99.95 फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन। एक और प्राउड की बात है कि हमने, ये हमारी टेक टीम है जिन्होंने हमारा आईकैट का मॉक बनाया। तो इन्हीं के मॉक बेसिस पे आज ये अहमदाबाद के इंटरव्यू देके आ रहे हैं। तालियां गाइस। और ऑफ कोर्स कंटेंट टीम, इस बार तो भर गई है टीम, पिछली बार नहीं थी। तो सारे कंटेंट टीम वाले हाथ उठा दीजिए। कोई इनको पोच नहीं करेगा, बाहर से देख लेना। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। अब आपका जो आईकैट मॉक में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है और लोएस्ट स्कोर क्या रहा है? Highest was 99.91. Okay. And lowest was 87. 87 lowest. And in CAT you scored 99.95. Basically CAT इनका हाईएस्ट परसेंटाइल रहा है। काफी सही, काफी सही। और आपका ये स्केल्ड स्कोर, स्कोर बता दीजिए iCAT में और CAT में। iCAT में range was around 110 to 120, 121. राइट। और फाइनल में 111. तो ऑलमोस्ट सेम रेंज ही। बेसिकली iCAT में जो आप लाओगे अच्छा खासा, वही आपका CAT में भी आ जाएगा बेसिकली, है ना? तो अगर आपको, अच्छा चलिए, आपने जो 4-5 मंथ की प्रिपरेशन करी, आपको डाउट आता था तो आप क्या करते थे? या फिर आपको ज्यादा डाउट नहीं आता था? क्या आप दूसरों के डाउट से सीखते थे या फिर आप खुद ज्यादा डाउट पूछते थे? मैं वो ग्रुप में था iQuanta के, तो उधर लोग अपने डाउट्स लाते थे। तो उन डाउट से मैं अपने डाउट्स भी क्लियर करता था एंड उससे मैं लर्न भी करता था। और मेरे को खुद भी को डाउट आते थे तो सेम मैं ग्रुप में डालता था। तो उससे जो इजीली रिजॉल्व हो जाता। मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप दूसरों के डाउट से ही सीख जाते थे, है ना? आपको खुद से ही सारा प्रिपरेशन कर लेते थे। तो टेक्निकली ये 4-5 मंथ में ला रहे तो खुद से ही जीनियस होंगे। बट iQuanta का थोड़ा सा क्रेडिट ले लेते हैं अपन, है ना? मेजरली तो इन्हीं का क्रेडिट है, बट थोड़ा सा ये क्रेडिट ये तो लेना पड़ेगा कि यार सिर्फ iQuanta के मॉक एंड रिसोर्सेज से ही इन्होंने 9.95 लेके आया। थैंक्स अ लॉट मानसी। नेक्स्ट, अभी सौरदीप जैसे अहमदाबाद से अपने आई एम अहमदाबाद का इंटरव्यू दे करके आए हैं, जस्ट दिल्ली लैंड हुए हैं। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका IMA का इंटरव्यू देके? So to be honest, it was pretty tense. It was pretty grilling. As in, I went in ki like, okay, it will be a conversation, but it was not as smooth as I had hoped. But overall, it was a fun experience, and I think I gave a lot of good answers. I was confident in my answers, and I took my stand. And let's see what happens. Okay, so what other interviews are you done with and what all are lined up? So far I have completed Calcutta and Ahmedabad interviews, and in this month I have a couple of others, Lucknow on 17th and Bangalore on 20th, and next month I have Kozhikode. Okay. So सबसे ज़्यादा grilling experience कहाँ पे हुआ आपको? Like, and what were the questions which you felt were difficult to answer? So primarily the दो experience जो मुझे हुए हैं Calcutta और Ahmedabad में, Ahmedabad was definitely the more grilling one,
and the kind of questions which I felt were targeting me more were based on the general knowledge of things. Like as I have a diverse background, so मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लाइक मेरे यूजी से सवाल पूछे गए थे. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहाँ पे रहता हूँ, लाइक आई लिव इन साउथ गुजरात, तो साउथ गुजरात के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे. एंड द थिंग वाज व्हेनेवर आई एम गिविंग अ क्वेश्चन आंसर तो उसका मुझे काउंटर दिया जा रहा था. सो देन वो काउंटर पे अगेन आई हैड टू मेंटेन माई स्टैंड कि नो, लाइक दिस इज़ व्हाट आई eventually, even if you are giving me a counter, I am feeling like this is the right way or this is the right thing. And even AWT में जो अहमदाबाद में से AWT होता है, एनालिटिक राइटिंग टेस्ट, सो मैंने जो लिखा था उसके ऊपर भी मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया गया था. सो दोज वर समथिंग विच वॉज नॉट आस्क्ड दैट मच इन कैलकाटा और एनी अदर preparation mock interviews which I gave. So that was a bit, I would say I was not completely prepared for that, but overall I feel I gave good answer and I handled them well. ग्रेट. और जैसे आपके दोनों बी स्कूल इंटरव्यूज में वर देयर एनी क्वेश्चंस इन कॉमन दैट बोथ ऑफ देम आस्क्ड? So कॉमर्स में तो वही कि like what are your goals, short term long term goals, like why do you want to do MBA, why, like as I'm a fresher, so why अभी MBA करना है, क्यों थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लिए पहले वो ले लो फिर MBA करना. So along those lines, like these are I think some of the standard HRQ questions जो which were given previously by iQuanta itself कि like ये क्वेश्चन रेडी करके जाना, ये क्वेश्चन समझ के जाना. So those were something which were asked in the couple of interviews I had, and I believe वो आगे भी पूछे जाएंगे. Great. So Sauradeep, how did you decide on doing an MBA? So coming from an engineering background, I always knew कि like अगर if I want vertical growth in my career, then MBA तो eventually करना ही होगा. So the primary reason for doing MBA was कि like an MBA gives you career opportunities and growth का जो rate होता है after an MBA it increases. And but having said that, what I feel is like the major reason why I did an MBA was कि after my third year मैंने एक internship की थी. So that internship was really an eye opener for me. Up until that I felt कि like हाँ कोडिंग जब आएगा वो करेंगे and then we will see what we will do in life. Like मास्टर्स तो करना ही है of course, but then मेरे दिमाग में वो क्लियर नहीं था कि हाँ MBA ही करना है. But I feel that particular internship gave me an experience to the business aspect of things, which got me an exposure कि हाँ ये leadership में क्या होता है, मैनेजमेंट को कौन से चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं. एंड पर्सनली मुझे वो ज़्यादा अपील किया as compared to the tech side of things. And no disrespect to the tech side of things, but personally the business side of things appealed to me more, and that's why I finally settled कि हाँ MBA ही करना है and अभी ही करना है because I feel कि एक बार में कर लो तो that is much better than again jobs में जाके then वापस आके then it becomes much more hectic. Right. So yeah. So being a fresher, like you are still in your final year of engineering degree, right? Yeah. So being a fresher, you're scoring 99.95 percentile. बहुत लोगों को misconception होता है कि if you don't have work experience, अगर आपके पास कोई भी work experience नहीं होता है, if you are a fresher, तो आप कितना भी percentile ले आओ, you are not going to get calls from ABC. So here breaking the misconception, Sauradeep, would you like to shed some light on that? I believe every profile is different. As in कि yeah, it might be true कि जितना भी high percentile लाओ आपको calls नहीं आएंगे, but then my profile was such कि like मेरा past academics was much good, and so this I had clearly in my mind कि because I am a general engineering male, so I am a gem, so I have to get a certain percentile, and I don't personally feel कि like even at 100 percentile you will not get a call. Definitely you will get a call, but then you have to see कि like how much your past is affecting your present and like how much your past can affect your future. So that way you have to prepare for CAT कि like अगर आपका past खराब है, like if your past records are not up to the mark, then you have to study more, then you have to prepare more, then आपको because definitely like every year the CAT number of aspirants is increasing. So पहले 99.95 में जितने बच्चों से आप आगे थे अभी वो नंबर बढ़ गया है. So that's a difference. So आपको प्रिपरेशन तो वैसे ही करनी पड़ेगी, but at the same time it is not something you would be demotivated भी कि like इतना परसेंटाइल लाना है तब जाके होगा. That's अगर आपने वो सोच लिया then at that point your ambition dies. You have to always think कि नहीं, I have to get it. If you want it, then you will work for it. Nice, good answer.
सो प्रिपरेशन पीरियड क्या रहा था आपका, कितना टाइम लगा आपको प्रिपेयर करने के लिए? ऑन एंड ऑफ आई हैड स्टार्टेड अराउंड अप्रैल में, बट प्रॉपर मैंने जून से स्टार्ट किया था. लाइक द 2 months of June and July आई हैड टेकन अप सम बुक्स जो मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो उनसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था. एंड देन आई केम अक्रॉस iQuanta's IIM ABC बैच. सो द डायनामिक क्वेश्चन पार्ट ऑफ इट अपील टू मी मोर. वाई? बिकॉज कि यू नो मैं बुक लेके करता था कि आई हैड टू सेट अप गोल्स फॉर माई सेल्फ कि लाइक हाँ आज ये सेक्शन किया तो वो सेक्शन छूट जा रहा है, कल वो सेक्शन किया तो ये वाला सेक्शन छूट जा रहा है. बट व्हाट द ABC बैच वाज यूनिक इन द सेंस कि लाइक तीनों सेक्शन में मुझे एवरीडे क्वेश्चंस मिल रहे थे. सो आई कैन सॉल्व एंड आई कैन बी फ्लुएंट इन ऑल द 3 सेक्शंस टुगेदर एंड आई कैन गिव माई फोकस. ऐसा नहीं कि मैं एक पे फोकस करूँ तो दूसरा मैं छूट जा रहा है. सो दैट वाज समथिंग विच आई रियली लाइक्ड. Like even before taking it, that was my selling point. कि हाँ ये है, इसलिए मैं enrolled in ABC. And why I did not take any other crash course or any classes, because frankly मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के classes भी देखूँ. I felt कि like I can do it with the solving and the practice करने से. And I believe all I needed was the number of questions. And अगर मैं गलत होता है तो मुझे पता चले कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ. And that is something, another thing कि जो the iQuanta teaching community is very supportive. It was very कि like कुछ भी doubt डालो तो you could instantly आपको reply मिलता था. 24/7 doubt solving. And not just on a teacher, even on a community. And another thing I truly incorporated in my preparation was not only learning from my mistakes but also learning from others' mistakes and doubts. किसी और को अगर डाउट आ रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है. तो आज मेरे को शायद वो डाउट नहीं आया, बट कल जाके मुझे वो सेम डाउट आ सकता है. So I would learn from them also, because groups and were very active. So all in all, I would say from the period of June up until November, and like November के end में भी like before 1 month of CAT, I had diverted my complete focus into कि like मुझे mock test लिखना है. So I had written around 25-30 mocks of CAT. Like iCAT मैंने 20 लिखे हैं, apart from that मैंने 5-6 अराउंड एंड 5 के पेपर मैंने बिठाए थे. सो रिलीजियसली आई यूज्ड टू सिट कि नहीं मुझे उसी पीरियड में, लाइक मैंने इवनिंग स्लॉट था 4:30 to 6:30 का. सो मैं उसी पीरियड में आके मॉक लिखता था ताकि आई एम ट्रेन्ड to write and perform in that particular mindset. So those are some of the things you have to incorporate in your preparation. It's not just problem solving and not just knowing how to get the answer. It's getting the answer in the right time at that particular moment. So those are the things I really incorporated in my preparation. Great. These are some great insights already. Yeah. And what was your roadmap, like month-wise roadmap क्या रहा आपका for each of the section Quant, LRDI and VARC? So very frankly, I had not kept anything in mind. I knew कि like जितना मेरे को experience लग रहा था कि like for let's say quant first. Okay, so quant में like arithmetic was there, algebra was there. These two were I was like हाँ ये तो पूरा करूँगा मैं. And geometry was something which I had kept for the end. कि अगर होता है तो ठीक है, otherwise I will leave it. And the modern maths, PNC and all those probability and all those things. This also I would take a good like 2.5 sections was my complete, and geometry was like आएगा तो देख लेंगे, otherwise I will leave it. So starting में से मैंने पहले arithmetic को strong किया, then algebra पे मैंने focus किया, then by the time September आ चुका था, so then मैंने धीरे धीरे mocks लिखना, like weekly mocks लिखना शुरू किया. Then I found कि नहीं geometry पे भी थोड़ा, and in that period जब मैंने join किया था the ABC batch, उसी टाइम पे continuously how the ABC बैच के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर हो रहे थे कि लाइक शुरू में अलजेब्रा के क्वेश्चन ज़्यादा थे, फिर बीच में अरिथमेटिक के, फिर ज्योमेट्री के. सो द सेक्शन विच आई वाज प्लानिंग टू लीव, ABC ने मुझे वही क्वेश्चन ज़्यादा दिए. सो आई फील कि वो मैं ऑलरेडी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड ABC गेव मी द थर्ड, द ज्योमेट्री वन. सो आप मानोगे नहीं, मेरे कैट मतलब इन माई कैट अटेम्प्ट आई वाज इन अ सेशन 3, एंड उसमें देयर वाज सम रियली टफ ज्योमेट्री क्वेश्चंस, मैं वो सही करके आया हूँ. एंड सम स्टैंडर्ड अरिथमेटिक वाले क्वेश्चन मैं छोड़ के आया हूँ, बिकॉज आई वाज लाइक इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन होगा, ये मैं छोड़ देता हूँ. बट वो ज्योमेट्री वाले बिकॉज क्लास में थे, ABC में थे, दैट्स व्हाई आई कुड डू इट. सो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लानिंग. सिमिलरली अगर मैं LRDI की बात करूँ, लाइक अरेंजमेंट्स वाज माई वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वेन डायग्राम वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग. एंड DILR पे मैंने उतना, DI पार्ट पे मैंने उतना फोकस नहीं किया, डेटा इंटरप्रेटेशन में फोकस नहीं किया था. लाइक क्या है, बिलीव इन माई इंस्टिंक्ट्स कि लाइक हाँ ठीक है करेंगे,
कर लेंगे. एंड टर्न्स आउट कि इस बार 12 ना, हाँ 4x3 12 DI के क्वेश्चन, मतलब 12 सेक्शन क्वेश्चन में एक भी DI का क्वेश्चन नहीं था. सो इट वॉज ओनली LR. सो और LR में भी मैंने LR was something which I had on and off करता था. I used to solve more and more questions. वो iQuanta की playlist थी YouTube पे. That was a really beneficial, really helpful playlist. And even LRDI 70 का जो series चलता था. Even Quant में भी QA 250 जो इंद्रजीत सर ने just 1 month before the CAT he used to give questions. I think those questions were really both morale booster and concept reminder कि आपने ये concept पढ़ा था उसको वापस revise करना. And as far as VARC goes, I like sorry self-bragging होगी. मैं ICSC से हूँ. So RC part was my always very pretty strong. But then VA part में was something I always I could narrow into 2, and but in that 2 narrowing I used to choose the wrong answer, wrong option. Like parajumbles was my nemesis. Even मेरे CAT में भी मेरे parajumbles नहीं, मेरे marks उतने नहीं आए हैं. So even then I used to continuously keep trying कि like ऐसे ABC में मेरे को मिलते थे. So I used to every day कि like हाँ नहीं करते हैं. I used to ऐसा नहीं कि, और कभी कभी ऐसा होता था like very honestly I used to feel कि हाँ एक दिन सारे क्वेश्चन मिटाए हो रहे हैं. So मैं चढ़ जाता था कि हाँ आज तो सारे क्वेश्चन हो गए, I am following the right path. But the very next day ABC would challenge me with such kind of questions कि मेरे like again my motivate like confidence थोड़ा नीचे आ जाता है कि यार आज इतने क्वेश्चन नहीं हुए. So that pendulum or that sine wave of the confidence जो ABC ने properly test किया कि ऐसा नहीं कि पूरा चढ़ा के रख दिया. It used to give the right amount of difficulty and a right amount of frequency. So that is something ABC, I would give a lot of credit to the ABC practice batch. कि the type of questions, the amount of questions and the way in which the questions were structured. So this was basically how I approached all the 3. Great. So like for most of you, you don't know that Sauradeep is from NIT Goa. So Sauradeep, distraction से कैसे दूर रहते थे आप? Being in Goa, distraction से दूर रहने का क्या आपका strategy रहा? First thing, yeah, NIT है गोवा में. It's like that's the most common thing I hear कि like गोवा में NIT. But distraction से दूर रहता था कि I'll be very honest, in the first few months I was a bit chill कि हाँ ठीक है, I would go out with my friends, I would party and I would go to the beaches and everything. But then as the D-Day comes, जैसे जैसे CAT pass आता है, then आपको if you really want the percentile, then you have to make the sacrifices. And at this point I would like to mention कि like it was at that moment कि मेरे friends ने और मेरे family ने मुझे काफ़ी support किया था कि like they knew that I was a fun loving person, but they understood कि नहीं इसको ये genuinely करना है. And okay, sometimes they were like यार ये हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा, and like आ सकता है तू, but then they understood कि नहीं that is something he really wants, and उनका support था. I would say I would accept this in front of everyone कि उनका support था. They were behind me, that's why I could focus more, that's why I could work in one direction and perhaps get the percentile. अगर if my friends, I would like to take a few names like Ankit था, Shreya थी, and Aditya Shekhar tha, and this were, and a lot more. Will not be able to name all of them, but these were some of the people who were always behind me and who always believed in me. So जिसकी वजह से I could see कि नहीं distractions नहीं. These are the people who I have to these are who are standing for me, who believe in me, and I have to do. And then secondly मेरा personal तो था ही कि नहीं I have to get it, like ambition driven personality. So more or less that. Sauradeep, now let's talk about another misconception with engineers, that is they have a better hold on quant than VARC. So what do you have to say on this? I would not completely disregard that fact कि definitely, because every year I have seen and everyone is saying कि like CAT का जो level है, जो especially quant का level है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है and वो ज़्यादा से ज़्यादा tough होता जा रहा है. Like this year especially, even as an engineer I would say कि the quant section was really tough, and like for even me, after 22 questions I could do only 13. So 13 that I attempted. So the level is definitely rising more and more of quant, and I do feel कि more effort is needed, but ultimately it comes down to the basics. If your basics are strong, then anyone can
complete it. The only reason the non-engineers are unable to do, I would not say the only reason, but one of the main reasons why the non-engineers are unable to maybe attempt quant that much is because they are not in touch with the basics as strong. So अगर वो basics में अगर if they can work, if the basics को improve कर सकते हैं, then I believe that anyone can get a good, I'm not saying the highest, but a good percentile in the quant section. And as far as the VARC part goes, I think it's a trade-off. Like, because engineers are coming from all parts of the country, so maybe English is not something which is in focus for engineers. But having said that, it is not that engineers should not work on their English and should not work on their verbal ability, because in the long run they have to, even if they crack the CAT or don't crack the CAT, they have to work on their verbal ability. They have to work in interacting with the people, in the interpersonal skills, communication skills. So that is something, engineers themselves have to take up the initiative, and they have to work more on it. So it goes on both the ways. So right, you talk about being very strong with the basics, right? Yeah. So non-engineers के लिए this was very important, and बहुत सारे students हमारे पास भी आए थे for the same thing कि quant was very tough. Yeah. Last year as well. Yeah. 2023 maybe it was very tough. Yeah. So for that reason only, iQuanta this year introduced their non-engineers conceptual videos. Yeah. Where from the very basic की rational numbers क्या होते हैं, rational numbers क्या होते हैं, all of that we are going to cover in that. Yeah, that's a very good initiative by iQuanta, because that will really get, it's like grassroots level teaching. Like you are improving the grassroots, Right. and without the roots, the tree would not grow. Definitely. So coming to the mock section. So mock section generally लोग mocks around July, August इस time के around देना start कर देते हैं. So आपने कब से देना start किया, कितने mocks दिए, and what was your strategy to analyze the mocks? Okay, so I will initially मैंने उतने mocks नहीं दिए थे. Initially like starting में मैंने एक mock दिया था to see paper pattern कैसा होता है and all, what are the different concepts I have to learn and how is the general paper pattern वो जानने के लिए. Then preparation की थोड़ी, then around August I would say मैंने proper late July to early August में मैंने in the 2-3 weeks I gave frequent 2 या 3 mocks दिए थे मैंने. Then I found like I was completely sold on the ABC thing, so ABC के साथ साथ मुझे mocks भी purchase करने. So like I got both of those, and like iCat के 2 iCats free रहते हैं. So I attempted those. I gauged the level कि हाँ, this is neither too tough with some other mocks were and neither too easy. Yeah, this is a real challenge for me, and which I felt like जो the student reviews which I read, yeah, iCat levels were actually equivalent to the real CAT levels. So that is something which sold the iCats to me. So and then for some time, because मेरा फिर college का भी थोड़ा pressure था, so I could not give the CATs, but preparation चालू रहती थी. And as I mentioned कि 1 month before the CAT मैंने like from late September until November I used to give frequently CATs. पहले वो हफ्ते में एक बार होते थे, and then towards the last 2 weeks तो मैंने continuous 14 days को 14 mocks लिखा. So and coming to the analysis part of it, obviously initial वाले में जो होते थे उसमें marks कम आते थे. So I would see कि अच्छा आज मैंने यहाँ पे गलती की, आज this was a question which was repeated from concept similar था. So I have to grasp them and I have to work on them more. I have to note down कि हाँ ये वाले में ये वाली ट्रिक यूज़ की है तभी जाके ये आंसर निकला है. सिमिलरली फॉर LRDI कि LRDI इज़ रियली समथिंग विच नीड्स अ बेंट ऑफ माइंड कि लाइक आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका वो बनेगा कि क्रैक यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स. सो दैट इज़ समथिंग विद प्रैक्टिस. LRDI के लिए नो स्पेसिफिक एनालिसिस, ओनली कि लाइक कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूशन, बिकॉज आधा सोल्यूशन समझ के आपको कभी ग्रोथ नहीं होगा उसमें, वो आधा ही रह जाएगा. एंड VARC में भी VARC वाज I would say subjective, because RC is something you would कभी-कभी आपको लगेगा कि आपका ऑप्शन सही है, पर कभी-कभी वो ऑप्शन गलत हो सकता है. So and verbal ability is something I struggled, I will say, throughout, but I would say I made the efforts towards it. अब कितना हुआ सक्सेसफुल कितना नहीं हुआ, that is to be seen, but in general I would say कि like mock दो, जानो क्या सही किया है आपने, इवन जो सही भी किया है उसका भी आप जो फॉर्मूला था, जो हिंट आपने जो भी ट्रिक लगाई थी उसको ग्रास्प करके याद रखो, क्योंकि देन अगेन आपको सेकंड टाइम भी यूज़ करना हो सकता है वो. एंड जो गलत हुआ है
उससे लर्निंग्स लो, एंड जो नहीं अटेंड कर पाए उसको ठीक से समझो, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव. So, Soradeep, what was your ideal day as a CAT aspirant? What did a day in your life look like when you were preparing? As a fresher student, जो फाइनल ईयर में है अभी भी, सो एंड इन हॉस्टल सुबह उठो एंड ब्रेकफास्ट करो एंड देन सिट एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस. ABC के कुछ क्वेश्चन लगाओ, LRDI के कुछ क्वेश्चन लगाओ. देन आई वुड गो हैव माई कॉलेज एंड एवरीथिंग, कम बैक. कॉलेज का कुछ काम होता है, लाइक प्रोजेक्ट का कुछ काम हो गया, कोई असाइनमेंट हो तो वो किया. एंड देन दिस वाज इन द इनिशियल मंथ्स, वो किया. एंड देन शाम को आके देन वापस थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड किया, हाफ एन आवर 1 आवर. फिर डिनर करके वापस आके देन अगेन यू सिट, सॉल्व सम क्वेश्चंस, गिव अ सेक्शनल टेस्ट एंड ऑल. सो बी इन टच विद इट. देन जैसे टाइम बढ़ा, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, देन इट वाज मोस्टली सुबह उठो, एक टाइम फ्रेम में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो ABC वाले. जब ABC वाज व्हेन द ABC एंडेड, आफ्टर दैट जो QA 250 वाले शुरू हुए थे, LRDI के प्लेलिस्ट लगाए थे मैंने. सो लाइक इन गिवन 2 आवर्स और गिवन 2.5 आवर्स यू हैड से कि इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. तो वो किए. देन कॉलेज किया, वो दैट इज़ वो तो डिस्काउंट नहीं कर सकते, यू हैव टू कंप्लीट कॉलेज. देन बाई विदाउट फेल, मेरा लाइक 5 o'clock को मेरा क्लास खत्म होता था, तो आई यूज्ड टू कम एट 5:30 to 7:30 मॉक, विदाउट फेल मॉक लिखो. एंड देन 7:30 to 8:30 एनालाइज करो उसको, कहाँ पे गलती की, एवरीथिंग. देन 8:30 जाके डिनर करके आओ, बाय 9:30 यू रिटर्न. एंड देन अगेन 9:30 to 11 यू अगेन स्टडी, कि लाइक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो. सेक्शनल ऐसा होता है, 1-2 सेक्शनल दे दो, कौन सा ट्रिकी लगा आपको उसको वापस रिवाइज करो. एंड देन अगेन 11-11:30 को सो जाओ. सो या. So, Soradeep was a part of the iQuanta CAT IIM ABC batch, which is a set of 7,500 plus CAT level questions. So, what would be your feedback? What would be your take on the level and quality of questions in that? The one thing which really sold, the two things which really sold ABC to me was the relevancy of the questions, in the sense that they were up to the mark with the current trends, the current difficulty. And as was evident ki like when I gave the exam, I could see the exact question being asked previously in the ABC, one of the ABC days. And the second part would be the regularity of the things. Like every day you are given a set of questions, you have to complete them. If you want to succeed, you have to complete them. That is something which for a candidate like me, who often struggle to give quotas, like I am someone like if I have started a topic, I would like हाँ करते जाते हैं, but you have to give equal weightage to all the different sections, right? So that is something ABC really prioritized and made it easy. Like I can prioritize, I can focus on all the 3 sections simultaneously in a single day. So the level of questions were really on point, if not more, and the quality in the sense, the delivery of the question, as I mentioned, कि like किसी दिन अगर वो थोड़े easy हो भी जाते थे, then other day it would be so challenging that you have to think better and you have to come up with the better solution. You have to be prepared basically for everything. Like easy से easy paper भी और tough से tough paper भी. So I credit ABC I give ABC a big credit to my percentile. So, enough about studies now. Let's come down to your interests and hobbies. क्या चीज़ें पसंद है आपको? What do you like doing in your free time? So, in my free time, a very Gen Z answer would be to scroll reels. But Definitely. yeah. But आप बता रहे थे कि आपने कैट के पहले डीएक्टिवेट कर दिए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल. हाँ, मैं लाइक प्रीवियसली मेरे फ़ोन में काफ़ी कुछ लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट सब कुछ बनाया जाता था, बट वो सब मैंने निकाला कि लाइक नो, लाइक इंस्टाग्राम यूज्ड टू बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग्स. आई वाज लाइक नो, ये ऐसे नहीं चलेगा. सो इंस्टाग्राम सबसे पहले इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया एंड टफ था, बट देन ओवर द टाइम यू हैव टू मेक पीस विद इट. देन यूट्यूब पे आई वुड सी informative videos, gain knowledge. That is something which I feel I always had the knack for, कि हाँ ज्ञान मिलने से मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं है. आई लव टू गैदर मोर एंड मोर नॉलेज. सो एंड सेकेंडली आई यूज टू फॉलो फुटबॉल अ लॉट. So my friends know I'm a Manchester United fan.
So in general, I used to watch football videos, I used to watch football opinions. So that is something which really, मेरे मन को शांति देती थी. And more or less वही. So football में interest है तो one question I'd Sure. like to ask, Sure. which I think you already know. So Ronaldo or Messi? I would say both. There's Don't be no. a diplomat. You have No. I have grown up in a generation which has seen both of them play, and I would be very honest. When I was growing up, I was a Messi fan. Through and through, I was a Messi fan. But you cannot. But yes, purely on the basis of skill is Messi. But you cannot discount the hard work and the dedication of Ronaldo. As a fellow teammate of both the members, Gerard Piqué said it best. Like Messi, like Ronaldo is the best of the humans, but Messi is beyond human. I think that statement is the complete representation. But if I have to choose, I would choose both of them, whether on the same team or on the different team. Because Messi made Ronaldo and Ronaldo made Messi. Right. If one of them was there and the other one was not there, then maybe they would not have reached the grades. They both pushed each other, they both made each other better. So any day, both of them. It's never one person on the stage for me. It's always, whenever Messi is standing, I will credit Ronaldo also for Messi being there, and similarly when Ronaldo is standing, I will credit Messi for Ronaldo being there. So that's a true football fans answer. कैट का प्रिपरेशन तो वैसे बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, बट देन मिडवे मेनी ऑफ देम लाइक बैक ऑफ, बहुत लोग प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है. सो हाउ डिड यू मेंटेन कंसिस्टेंसी, सौरदीप? So predominantly it was the support of my family, my mother, my father. And every day when I felt low, I used to call up my mom, and I would say कि यार उतना अच्छा नहीं लग रहा. Mom is like, कोई बात नहीं, तेरे को करना है, like आज नहीं है तो ठीक है, कल पढ़ लेना. कल, always the source of motivation was definitely my mother and my father, no doubt. He was also like कि हाँ ठीक है, even if you don't get a good percentile, but give your best. That is something which I always found from my family. And as I mentioned, my friends in my college, in my school, and everywhere, I'm very blessed to have friends like them who are always supporting me, who have always been there for me, and who have always understood me. So खुद से तो होता ही है कि like if you have that ambition in you, you would feel like ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके CAT के preparation में you are always achieving your targets, you are always solving all the questions. You are bound to miss the deadlines, you are bound to get the questions wrong, and you are bound to feel demotivated. But it's the people around you which give you that atmosphere. So my tip or my suggestion to the people will be, surround yourself with such friends, surround yourself with such people, who give you that motivation. And even if you are feeling low, then at least they are there to lift you up. And if you are not so fortunate enough, then I believe you can seek God. Like even I would say in sometimes I used to go to the temple when I used to feel a bit low. I used to listen to a few bhajans and all. So to calm my mind, to okay, this is not my day. Okay, tomorrow I will come again I will practice, again I will do better. So in some way or the other, you have to keep your composure. Either it can be friends or family, or it can be the Almighty Himself. So that was my way. Definitely a good answer. So daily targets की जब हम बात करते हैं, तो how did you set your daily targets? Were they more of hourly basis कि मुझे आज 2 घंटे पढ़ना है, मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, या फिर आप number of questions set करके रखते थे कि आज मुझे 15 क्वेश्चन क्वांट के लगाने हैं, 2 सेट LRDI का लगाना है, something like that? So it was a mix of both. कि like number of questions भी होते थे कि हाँ, because सारे sections cover करने थे. So कुछ like 2 VARC लगा लिए, 4 VA में लगा लिए, फिर 2 या 3 LR लगा लिए, फिर 10-15 क्वांट लगा लिए. एंड देन एट द सेम टाइम आपको एक टाइम में करना है उनको कि लाइक हर एक सेक्शन को लाइक 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में, लाइक एक LR का क्वेश्चन यू शुड डू मैक्सिमम 10 मिनट्स, एक क्वांट का क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मिनट्स, एंड टोटल 10-12 मिला के मैक्सिमम यू शुड टेक हाफ एन आवर. ठीक है. एंड अनदर थिंग विच रियली लाइक आप फुल मॉक जब लिखते हो, जो यू शुड कंसिडर कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं. Many aspirants fail कि like एक tough question आया, हाँ इसको solve करना है. But that's not the point of CAT. The point of CAT is to score more, not to score more correctly. कि आप
ज़्यादा क्वेश्चंस को आपके मार्क्स चाहिए. आपने जैसे आई एम ओनली टेलिंग कि मेरे क्वांट में 22 में से सिर्फ 13 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे. सो बट उन 13 के ओनली अटेम्प्ट 13 आई गॉट 99.91 परसेंटाइल इन क्वांट इटसेल्फ. वाई? बिकॉज मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा थी. Yes, accuracy is more important. And if you are not able to solve the question, then it's very possible that others are also not able to solve the question. So instead, जो question आपको आ रहा है तो उसको आप अच्छे से करो. And paper attempting is more of a practice. It's a skill that needs to be practiced. कि आप जितना ज़्यादा पेपर दोगे उतना ज़्यादा आप nuanced होगे कि हाँ ये challenges आ सकते हैं कि ऐसा अगर ख़राब question आया तो उसको छोड़ना है. It's like outside of की delivery है, उसको आपको छोड़ना है. ऐसा नहीं कि उसको मारने गए और एज लगा के आउट हो गए, मतलब नेगेटिव मार्क्स आ गए. यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट द क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट. एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एंड योर टाइमिंग आपकी एकदम लाइक इन क्रिकेटिंग टर्म्स आपकी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तभी वो पिक्चर परफेक्ट शॉट आएगा, अदरवाइज वो एज लग के कैच हो जाएगा. सो दैट्स Great answer, great answer. And like you are still in your college, you are still pursuing your engineering. So in 4 सालों में 3 things you have learned that you think you can implement in MBA as well. So the first thing I would say would be workload management, in the sense कि like as an engineer you have to do a number of things and at the same time like कॉलेज के फेस्ट भी होते हैं. अभी तो जैसे मेजर प्रोजेक्ट भी चल रहा था हमारा, क्लासेस भी जो चलते रहते हैं. सो उसके बाद कैट की प्रिपरेशन करना, लाइक हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. So, but even in all of that, you have to maintain, manage and everything. So, that is something which I believe in MBA is also a very challenging degree. So, workload management is definitely one of those. Another one is engineering से when you are working in teams, आपको teamwork का काफ़ी वो मिलता है, like projects करते हैं जब हम. So, you are working in a team, the team में काम करने में क्या challenges आते हैं कि like कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है हमें फुलफिल करना है. सो वर्किंग इन अ टीम एनवायरनमेंट में कैसे ऑपरेट करना है, दैट इज़ अ लर्निंग विच आई बिलीव इंजीनियरिंग हैज़ गिवन मी. एंड फाइनली आई वुड से कि टू गेट थिंग्स डन, सिंपली सेड टू गेट थिंग्स डन, कि वट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, टाइम को मैनेज करके, द टाइम मैनेजमेंट एंड to get things done कि like in time, ऐसा नहीं कि like आप 5 दिन से पेंडिंग रख रहे हो, because MBA is again a very demanding course कि like आपको करना ही है उसको with time. So time management is another things which I believe engineering has taught me well. So Definitely. And the last question would be 3 things that you want to tell the future aspirants to keep in mind, mistakes not to make. So mistake not to make is first, don't get demotivated. As I mentioned कि like तुम्हारा गंदा दिन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा अच्छा दिन हमेशा हो. So don't be demotivated. Second would be to face the challenges. कि if you are struggling with something, then you face it. It's not like कि don't give up. कि नहीं हाँ ठीक है मेरे को छोड़ देना है इसको, कि like ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे. No, the moment you give up, वो दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये गिव अप है. जस्ट टेक इट एज अ हिकअप कि लाइक आज हिचकी है, कल पानी पी के वो हिचकी बंद हो जाएगी. यू हैव टू ओवरकम इट. एंड फाइनली डोंट बी हेजिटेंट कि लाइक वन थिंग आई फील कि लाइक आई पर्सनली स्टिल आई बिलीव कि मैं काफ़ी हेजिटेंट टू अप्रोच द पीपल, बट आई फील कि लाइक दैट डज नॉट हेल्प मी इन केसेस. वेर एज कभी कभी होता है कि वेर आई फील कि लाइक हाँ चलो मेरे को हेजिटेंसी हो रही है बट नहीं, जाके पूछ लेते हैं. सो उससे अच्छा ही होता है आपका कि अगर आपको कोई डाउट हो लाइक ऑनलाइन फोरम में आप पूछ लो. आपके लिए भले ही वो क्वेश्चन सिली है, बट मे बी इफ़ यू आस्क द क्वेश्चन, काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो वो आंसर आपको भी आंसर मिल जाएगा, बाकियों को भी आंसर मिल जाएगा. सो डोंट बी हेजिटेंट इन आस्किंग फॉर द राइट थिंग्स. इट्स ओके इफ़ यू हैव अ सिली डाउट, इट्स टोटली नेचुरल कि आपको सिली डाउट हो, बट डोंट बी हेजिटेंट, बी ओपन, एंड इफ़ यू रियली वांट इट, then you will definitely work towards it and prioritize your work. So that's all. Thank you so much, Sauradeep. It was great having you here. Thank you, Mansi. And all the best for cracking all the B school calls. I hope. Thank you.